morning students. I hope you all are excellent. Students, in the previous video we have learned about travel and communication. So let's recap before starting today's topic. Students, there are mainly three types of transport: land transport, water transport and air transport. Vehicles that move on land are called land transport. For example, ambulance, scooter, train, bus, etc. Now, vehicles that move on water are called water transport. For example, tanker, boat, motorboat, yacht, etc. Now, vehicles that move in the air are called air transport. For example, aeroplane, rocket, helicopter, etc. Students, जब हम अपने आइडियाज राइट करके या बोल के शेयर करते हैं उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं. In older days, these were the means of communication that are displayed on the screen. And they are pigeon, drum beaters. Students, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ओल्डन टाइम्स में एक दूसरे से कम्युनिकेशन ऐसे ही हो पाती थी. The olden means of communication are fire signals, smoke signals, radios, drums, pigeon, etc. Students, nowadays we all are using internet, radio, television, newspapers and magazine to share our ideas and to communicate and to share important information. So students, in today's video, we'll attempt a fun activity. So, here how the activity goes. So here we come to think and write. Think and write the names of any two vehicles you can see to travel to school, another city or another country. अब आपको ध्यान से सोचना है ऐसे कौन सी टू व्हीकल्स हैं जिसकी हेल्प से हम स्कूल जा सकते हैं, दूसरे सिटी में जा सकते हैं एंड दूसरी कंट्री में जा सकते हैं. ध्यान रहे, स्कूल जाने के लिए डिफरेंट ट्रांसपोर्ट, दूसरी सिटी में जाने के लिए अनदर ट्रांसपोर्ट एंड दूसरी कंट्री में जाने के लिए भी डिफरेंट ट्रांसपोर्ट यूज होता है. थिंक एंड टिक द नेम्स ऑफ द व्हीकल्स दैट नीड फ्यूल्स लाइक पेट्रोल टू रन. अब आपको ध्यान से सोचना है कि इनमें से ऐसे कौन से व्हीकल्स हैं जिन्हें मूव करने के लिए पेट्रोल की जरूरत पड़ती है. सो द नेम्स दैट आर गिवन बिलो आर बाइसाइकिल, कार, rowing boat, horse carriage, aeroplane, bus. Students, now it's time to practice some questions given from the content. So, let's see what's given there. So students, now here is a homework for you. You have to do the page number 57 in your textbook. Exercise 1 and 2.
So, अब वेट किस बात का? जल्दी से बुक ओपन करो and exercise 1 and 2 complete कर डालो. That's it for today, kids. We'll meet again in the next video. Till then, keep enjoying, keep laughing. Thanks for watching. See you in next video. Bye bye.